So hello everyone and welcome to Career Launcher. So in today's class, we are going to discuss some basic economic terms. And the reason why I have decided this class is because recently we have seen budget. So many of you might not have understood the basic terms. And that is why in today's class, I am going to clear those terms like fiscal deficit, primary deficit, effective revenue deficit, what is capital account, what is revenue account. Okay. So I'll discuss this in today's class so that it would be easy for you all to understand the budget. Second thing is tomorrow at 6 p.m. we'll be having a session on economic survey, which was recently presented by the government. So we will discuss that tomorrow at 6 p.m. So let us begin with today's class. So am I audible, visible? Everything is fine? So if everything is fine, please write yes in the comments so that we can start our session. Is everything fine? Okay. So first of all, please subscribe to the channel, go to the live section, and we have already conducted budget session. Okay. So this budget session, one was done by Govind sir, which is actually in complete English, and one is done by me, which is in English. English means the text was in English, but I was speaking in Hindi. So either of the two you can watch, whichever you like. And tomorrow at 6 p.m. we'll be having this session where we will be discussing about economic survey. So basically, economic survey tells us about the last fiscal year, which actually will be ending, of course, on 31st March. So the previous fiscal year, which tells about how the performance, how the world economy is performing, how the Indian economy is performing, what are the problems, what are the solutions. So things around it are mentioned in economic survey. Okay. So that is why I'll be discussing this in tomorrow's 6 p.m. class. This will give you a comprehensive idea about how economy works. And if you think that economy is not important for CLAT, then I would suggest please see the previous year question of CLAT 2020. When the syllabus got changed in CLAT 2020, so there was one entire passage which was based on economics, and the terms like foreign exchange reserve, long-term repo operations, etc. were mentioned in the passage as well as in the questions. So you should not think that if you are preparing for CLAT or any other law exams, then economics is not important. Please do not think in this way. And I'll tell you the reason also. If you want to become, if you will become a lawyer or a judge in the future, then of course you have to take a lot of cases related with economics, banking, business, non-performing asset. Okay. So of course you should be knowing about economics. You cannot say this is not important. Okay. So you have to be careful here. So I'll be discussing this tomorrow. So let us begin. In today's class, we will discuss economic terms, which would be helpful in understanding the budget as well as helpful in understanding the economic survey. Okay. So let us begin with the first term. First thing is, we are talking about there are two types of accounts. Okay. So there are two types of accounts when we discuss about budget. Okay. So basically, one is called as capital account, and another is called as revenue account. So this I'm discussing it in detail. So can you please tell me the difference between capital account and revenue account, if anyone knows? If you tell me, I'll be very happy. देखो ऐसा हम लोगों ने बजट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि व्हाट इज द रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर. So these terms we had discussed in the budget class. So that is why I want you to actually understand what is capital expenditure and what is revenue account, what is capital account. जो आप बता रहे हो ना वो एक्सपेंडिचर पार्ट बता रहे हो मनजोत, revenue is income. No, actually it is not that. You are saying capital means expenditure and revenue means income. No, that is not correct in this context. So basically there are two types of account of the government. One is called as capital account, other is called as revenue account. So we are talking about the so revenue account are those accounts which deals with day-to-day expenditure, day-to-day revenue and expenditure. So just okay. So what does day-to-day expenditure means? It means, for example, जो हर दिन होता है, जैसे एग्जाम्पल, I'll just give example. मान ली कोई रेलवेज है, सो रेलवेज चलाने के लिए डेली इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती होगी, इलेक्ट्रिसिटी, डीजल,
So day to expenditure. For example, salaries हर month देना होता है. Every month the government is supposed to give salaries to officers, employees, MLA, MPs. Okay. For example, running of government departments, उसके लिए कुछ खर्च होता होगा. So these are day to day expenditure. So revenue account में दोनों होता है, इनकम भी होता है और एक्सपेंडिचर दोनों होता है रेवेन्यू अकाउंट में. So when there is input, when it receives something inside the account, this is called as revenue receipt. Receipt मतलब आना, पैसा आना, money comes. And when there is expenditure from this account, this is called as revenue expenditure. So this account deals with day-to-day functioning of the governance system. Okay. Then the next one is capital account. So this account deals with long-term asset formation. Okay. For example, if the government decides to build a new flyover or a new let's say bridge or a new highway, 6-lane highway. So for that, government has to spend, and this actually will deal it capital account. Now, capital account, if the government is spending from capital account, this is called as capital expenditure. Otherwise, capital receipt. If the government sends money inside it, or the parliament sends money inside this account, so this is called as capital receipt. Or it gets money from somewhere, etc. इस अकाउंट में अगर पैसा डाला जा रहा है तो कैपिटल रिसीट का आ जाएगा, निकाला जा रहा है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का आ जाएगा. ठीक है. So when you are adding something in this capital account, that's capital receipt. When you are removing, when you are spending it, that's called as capital expenditure. Similarly, in revenue account, if you are putting any money inside it, this is called as revenue receipt. And if you are spending any money, that's called as revenue expenditure. Is this concept clear? Is this concept clear? Yes or no? Namo, please message me on LinkedIn. I will respond there. ठीक है. Is this concept clear? Because देखो यही होता है कैपिटल अकाउंट में, अगर आप देखोगे, so capital account deals with investment in fixed assets such as property, building, equipment, technology. कोई नया एसेट बनाने के लिए. Okay, so that is revenue expenditure, day to day, short term, day to day expenditure. ये capital expenditure long term के लिए होता है ना, day to day employees expenses and all. तो अगर इसमें कोई पैसा आ रहा है, मतलब प्लस हो रहा है, so it is called as revenue receipt. पैसा आ रहा है और इसमें से खर्चा हो रहा है, so it is called as revenue expenditure. Similarly, अगर इससे पैसा आएगा तो हम बोलेंगे capital receipt. Otherwise, if we are spending, that's called as capital expenditure. ठीक है. तो जनरली इसमें सबसे ज्यादा जॉब क्रिएशन का स्कोप कहां होता है, तो ऐसा कहा जाता है जनरली कि if the government is spending much capex, इसको कहते हैं capital expenditure, then of course it will lead to the formation of new assets like new bridges, new buildings, new highways, new industries, and this in turn will create more jobs. That is the idea about it. ठीक है. ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है and this would be helpful. तो ये हम लोगों ने बजट में डिस्कस भी किया था. Now I hope you will understand. तो पहले हम लोग रेवेन्यू अकाउंट देख लेते हैं. सो रेवेन्यू अकाउंट का रिसीट यानी कितना पैसा आएगा इस अकाउंट में. So this year, according to the budgetary estimate of 2025-26 and in the upcoming fiscal year, so it will come. The government's target is 34.2 lakh crore rupees. Okay, this is the amount that is supposed to come in the upcoming fiscal year in this account, revenue account. Okay, अब revenue account से expenditure कितना होगा? So here is the expenditure from revenue side, revenue expenditure from the revenue account. So it is believed that it is 39.4 lakh crore. Expenditure will come in the means the government will spend from this revenue account 39.4 lakh crore in the next fiscal year, that is 2025-2026, starting from 1st April 2025 ending on 31st March 2026. So I hope it is clear. This is revenue account. ठीक है. अब हम लोग चलते हैं कैपिटल अकाउंट में. So when I am saying capital account, so capital account में in the BE मतलब होता है budgetary estimate. So this is the budget estimates in the budget that in the upcoming fiscal year 2025-2026 the government will get receipt मतलब आएगा इस अकाउंट में पैसा. So the money will come inside this account. So 16.4 lakh crore rupees will come inside this account. ठीक है. अच्छा, पैसा आता कैसे जाता? तो एक्सपेंडिचर तो मैंने बता दिया कि रेवेन्यू अकाउंट में अगर एक्सपेंडिचर होगा तो डे टू डे एक्सपेंडिचर होगा, जैसे सैलरीज, पेंशन एटसेट्रा.
ठीक है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है तो इसमें आई एम नॉट गोइंग इन दैट डिटेल, बट जस्ट हैव एन आइडिया। कैपिटल एक्सपेंडिचर बड़े लेवल का एक्सपेंडिचर, ठीक है। सो कैपिटल रिसीट 16.4 लाख करोड़, it will get inside this account. So the with the help like that is the target of the government in the upcoming fiscal year. And the effective, देखो यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर की जगह इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर लिखा है, and that would be 15.5 lakh crore. So the government is planning that in the upcoming fiscal year, government will spend from capital account 15.5 lakh crore for capital account. So capital account में expenditure कहाँ होता है? Long term, building bridges, buildings, etc. है ना, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा में बड़े लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट 3 से 5 साल, मोर देन 3 to 5 years. So that's what it will be. So why it is written effective capital expenditure? देखो हर जगह effective word इसलिए लिखा है, effective capital expenditure means capital expenditure plus the monies that were provided to states for their capex. like तो गवर्नमेंट खर्च करेगी तो कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट विल गिव इट टू द स्टेट्स आल्सो टू डू कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो दोनों मिला करके इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जा रहा है. सो एडिंग बोथ whatever the central government will be spending and whatever it will be giving it to the state for capex purpose, for capital expenditure purpose, both are added to calculate it as effective capital expenditure. So total 15.5 lakh crore is the plan of the government in the upcoming budget, that in the next budgetary year 2025-2026 the government will spend this much from capital account. ठीक है, is it clear? I hope it is clear. कैपिटल अकाउंट और ये क्लियर हुआ होगा. तो आप देख सकते हो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर लिखा ना 15.5 लाख करोड़ इन द दिस इज द बजटरी एस्टिमेट. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर. इज इट क्लियर गाइस? बिकॉज दीज आर बेसिक थिंग्स एंड यू शुड बी नोइंग अबाउट इट. मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं क्यों बता रहा हूं कि क्वेश्चंस आए हुए. आई विल शो यू आल्सो द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. ठीक है, इन CLAT 2020 asked from economics. So of course when they change the syllabus pattern they ask this, so of course they can ask it again. आपको पता होना चाहिए. हाँ, so maintaining capex at 3% plus is a good mark, है ना, but currently it is as high as 4.2%, है ना. So generally 3% के आसपास अच्छा माना जाता है. 3% of GDP, ठीक है. So if they are spending 3% of GDP, the capex is considered as very good. Now let us talk about another concept called as direct and indirect tax. So can anyone explain what is the difference between direct and indirect tax? कोई बता सकता है? I'll be very happy. And can you please give some example in both the categories? If you write in the comment, I'll be happy, because these types of questions are asked. What is CRR? What is SLR? What is GDP? What is direct tax? What is indirect tax? These are basic questions and you should not be missing these questions in exam. So indirect tax means which can be passed on to others, or direct which cannot be passed on. This is direct tax. Okay, so for example income tax and corporate tax. So best example income tax का और indirect tax का है GST, customs tax, custom duty, etc. Now you'll be asking sir कैसे tax pass on नहीं कर जाता है ना. देखो अगर आप लिखोगे इसमें definitions, unit like personal income tax and corporate tax, these are direct taxes. और indirect tax में सब आता है custom duty, excise duty, central sales tax, GST. ठीक है, जितना भी excise duty हुआ ना, custom duty, excise duty, so these will come here. And income tax and corporate tax both are more or less same thing, एक ही पैटर्न पर है. So these are direct taxes. Now what is the meaning of that? इसका मतलब क्या हुआ कि पास नहीं कर सकते हैं ना. तो मैं बताता हूँ. For example, let's say you go to the shop and buy a biscuit of 5 rupees. 5 रुपए का आपने कोई बिस्किट खरीदा. You went to the shop and buy it. ठीक है, but in reality its price was actually ₹4 plus ₹1 was GST. ओके, मतलब 5 रुपए का था लेकिन 4 रुपए का था और 1 रुपए जीएसटी चार्ज. आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल. ठीक है, सो यू बॉट इट, आप गए आपने खरीदा एंड यू पेड 5 रुपीज. ये 5 रुपीज कंपनी को गया, बिस्किट की कंपनी को, और उसमें से 1 रुपया है, दैट 1 रुपी दिस कंपनी विल गिव इट टू द गवर्नमेंट. So the government was asking GST from company.
that whatever biscuit you are selling, if you are selling 1000 biscuit in one day, so 1 rupee per biscuit you have to give it to me as GST. But the company has passed on to you, and company, the biscuit picking company, is charging from you that GST. It means this GST has been passed on to customer by the company. पास ऑन कर दिया ना, बर्डन कंपनी, गवर्नमेंट ने कंपनी से मांगा कि अगर आप एक बिस्किट बेच रहे हैं 5 रुपए का, मैं एग्जांपल बता रहा हूं, तो आप हमको 1 रुपया दीजिएगा, तो कंपनी वालों ने क्या किया, 4 रुपया प्लस 1 रुपया मिला करके आपसे ले लिया 5 रुपया, और जो 1 रुपया था गवर्नमेंट को जीएसटी दे दिया। वो अलग बात है, कंपनी विल लेटर ऑन फाइल इनकम टैक्स आल्सो, वो अलग चीज है, बट हियर दैट इज हाउ द जीएसटी वर्क्स. So GST, custom duty, excise duty, these all can be passed on to others, but income tax नहीं पास किया था. For example, if someone is earning, let's say अभी तो 12 लाख तक exemption मिल गया ना, तो मान लो let's say someone is earning 20 lakh package, a person qualified IIM exam, let's say IIM Ahmedabad, passed on, and he is now getting 20 lakh salary. So he is supposed to give some tax to the government. इसको तो बंदा किसी और को नहीं पास ऑन कर सकता है ना. So if you are earning the income of 20 lakh per year, if you are an IIM Ahmedabad pass out, or let's say you are a lawyer or a judge, etc., you are earning money, then you have to give it to the government. You cannot pass on to others. तो डायरेक्ट टैक्स को पास नहीं किया सकता दूसरे को, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स को पास किया सकता है. Is it clear? I hope it is clear. If it is clear, please write yes. If not, then please ask what you are not able to understand. Is it clear, guys? I hope this is very simple, crystal clear, so you can understand. Now, अगर हम लोग देखेंगे तो यूनियन बजट में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन कितना था एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी. सो डायरेक्ट टैक्स वाज 7.1% ऑफ जीडीपी कलेक्शन था. ठीक है, और इनडायरेक्ट टैक्स लाइक जीएसटी वगैरह सब इसमें आ गया, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी एक्सेट्रा. सो दैट वाज 4.9% ऑफ जीडीपी. दैट इज द बजटरी एस्टिमेट ऑफ 2025-2026 ये आने वाले फिस्कल ईयर के लिए. इस फिस्कल ईयर में रिवाइज एस्टिमेट इज देयर बिकॉज़ अभी भी 2025 आया है, कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब 31st मार्च इज नॉट देयर, बट दैट इज द रिवाइज एस्टिमेट ऑफ 4.9% इनडायरेक्ट टैक्स का और 6.9% ऑफ जीडीपी डायरेक्ट टैक्स, और टोटल ग्रॉस टैक्स मतलब दोनों को मिला करके ना. सो दैट इज अबाउट 12% ऑफ जीडीपी इन द बजटरी एस्टिमेट ऑफ for the upcoming fiscal year, and for the this fiscal year it is 11.9%. So this is how you are supposed to understand these basic concepts. ठीक है, तो इसीलिए लोग जब कहते हैं कि जब टैक्स देते हैं तो टैक्स पेयर सिर्फ 2.2 या 2-3-4% जो होते हैं, जो आपको कहते हैं इनकम टैक्स पेयर होते हैं, बिकॉज एवरीवन डज नॉट अर्न मोर देन 12 or 13-14 lakhs. बट जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स तो सबको पे करता है. इनडायरेक्ट टैक्स इज इवन पेड बाय द पुअर्स. ठीक है, सो दैट यू शुड नो. जैसे मैंने बताया ना कि डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स है, जैसे मैंने बताया जीएसटी. सो इफ यू बाय अ बिस्किट, इवन इफ समवन इज वेरी पुअर, स्टिल ही इज सपोज्ड टू पे दैट. So indirect tax is paid by everyone. Direct tax is paid by only those who are actually getting salaried people with decent amounts of salary. मतलब अभी current situation से मतलब more than 12 lakh का package होगा then. Okay, मतलब direct मतलब we are talking about income tax and all. So this is what we have to understand, that indirect tax is paid by everyone. If you are buying a biscuit, cake, shirt, pant, you have to pay GST or whatever. If you are buying a petrol and a diesel, etc., so you have to pay whatever is the VAT or the taxes, the state level taxes and all. ठीक है, so that is what you should know. इसमें इतना percentage वगैरह numbers नहीं याद रखने. Now we have to understand a very basic concept of fiscal deficit. So can anyone tell me what is fiscal deficit? I'm giving 1 minute or 30 seconds if you can tell me what is. Although the definition is written, but can you please explain in simple terms? I'll be very happy. Okay, so let me explain. So fiscal deficit is nothing but total expenditure minus total revenue excluding borrowing. ठीक है ना, तो मैं बताता हूँ. Let me explain. Total expenditure minus total revenue excluding borrowing. या इसको और सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ. Let me explain in a simple way. For example, मान लीजिए आपके पास currently आपके पास कोई पैसा नहीं है. You are having zero amount of money, and you are on 1st January. So currently you are in 1st January 2025. You do not have any money. 1 जनवरी को, ठीक है, और आपने एक साल में till 31st December 2025
in this 1 year you earned, let's say for example 5 लाख रुपीस, 5 लाख रुपए आपकी इनकम थी, आपने पैसा कमाया, ओके, एंड योर एक्सपेंडिचर वाज ₹7 lakh. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज, जब आपके पास पहले कोई वेल्थ नहीं थी और आपने 5 लाख कमाए तो 7 लाख एक्सपेंड कैसे कर दिया? दैट इज द क्वेश्चन, that how can it possible? So it means this 2 lakh rupees you must have taken it as a loan from someone, या अपने फ्रेंड से लिए होगे, बैंक से लिए होगे, कहीं से भी. So this is nothing but fiscal deficit, the gap between whatever you are earning and whatever you are spending, which is generally filled by the loans, by taking the loans. जो खर्चा है ना, तो जनरली इंडिविजुअल लेवल पे या फैमिली लेवल पे इसको अच्छा नहीं समझाता है कि आप जितना कमा रहे हो उससे ज्यादा खर्च कर रहे हो. दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज गुड, राइट? You should spend, कहा जाता है ना कि cut your coat according to your cloth. It means whatever you are earning, you should spend lesser than that. You should do some saving. You cannot take loans to, spend more enough. Okay, this is the concept generally in families. But when we are supposed to run the country, we personally believe, especially if India is a developing country, so if we do not spend more, what will happen is India will not become a developed country. That is what the economists, because our target is that by 2047 India should be a Viksit Bharat or developed country. तो थोड़ा सा तो एक्सपेंडिचर बढ़ाना होगा. We have to have increase, especially capex. मैंने आपको जैसा बताया भी था, when we have more capital expenditure, this will create more projects, है ना? It will cause investment in new assets, creation of new assets, है ना? Like new building, bridges, industries, apartments, etc. So for that it will lead to job creation. इसीलिए आइडियली ये समझा जाता है कि द आइडियली 3% फिस्कल डेफिसिट इज जनरली कंसिडर्ड एज गुड एनफ. 3% of GDP. If this is the fiscal deficit of India, it means still 3% of fiscal deficit का मतलब क्या है कि we are spending more as compared to we are earning. ये मतलब हुआ ना. But yes, 3% of fiscal deficit is fine because we are a developing nation and we have to spend. We have to do investment, then only of course we can become a developed country. तो currently हम लोग को लेना पड़ेगा loans वगैरह and all from World Bank, IMF and different places or by corporate bond etc. लेकिन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए. This is according to FRBM Act, Fiscal Responsibility Budgetary Management Act. I think it was passed in 2003. Now, but what is the problem? The problem is कि it was going better, but what happened? जैसे ही COVID आ गया, so पहले भी 3% कभी नहीं रहा है. We have not achieved this target of 3%. But we were supposed to achieve, but COVID happened. तो जब COVID हुआ तो क्या हो गया? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ गया एंड गवर्नमेंट रेवेन्यू वेंट डाउन. जो रिसीट जिसको कहते हैं गवर्नमेंट रिसीट, बोथ इन कैपिटल अकाउंट एंड बोथ इन रेवेन्यू अकाउंट, द रिसीट जो पैसा आ रहा था सरकार को वो कम हो गया. व्हाई? बिकॉज द इंडस्ट्रीज वर नॉट वर्किंग, इंडस्ट्री सेल्स वाज नॉट डूइंग. कपड़ा बिकेगा, शर्ट बिकेगा, क्लोथिंग बिकेगा, तब ना जाकर के उससे टैक्स कलेक्शन होगा. सो व्हाट हैपेंड वाज द गैप बिटवीन द एक्सपेंडिचर एंड द रिसीट. जो पैसा आना था और जो पैसा खर्च होना था उसका गैप बढ़ गया, एंड दैट इज व्हाई वी हैव सीन दैट फिस्कल डेफिसिट वाज समवेयर अराउंड 6.4%. देख लो, इससे ज्यादा भी है ना. तो अब हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट. इफ यू सी दिस इन दिस बजटरी एस्टिमेट इट इज 4.4%. सो इन द अपकमिंग फिस्कल ईयर the government's target is that we should bring it to 4.4%. And what is the ideal fiscal deficit? Please tell me. Ideal fiscal deficit should be 3%. That is what you should be knowing. ये पता होना चाहिए, ठीक है? और इस साल जो मार्च में जो एंड होगा फिस्कल ईयर, इसका जो टारगेट है वो है 4.8%. That is what you should be knowing about. ठीक है? तो ये हो गया फिस्कल डेफिसिट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फिस्कल डेफिसिट एकदम पता होना चाहिए. प्लीज डू नॉट से कि हम लॉ के स्टूडेंट हम इकोनॉमिक्स क्यों जानेंगे. प्लीज डू नॉट से दिस. इवन इफ यू आर लॉ स्टूडेंट यू शुड बी नोइंग इट. दीज आर बेसिक थिंग्स. उसके बाद एक होता है रेवेन्यू डेफिसिट. तो मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज रेवेन्यू डेफिसिट. देखो, व्हेन यू रीड अबाउट आर्टिकल 112 annual financial statement, also known as budget, because I have discussed budget and article 112, it clearly says that the budget should have a separate revenue account and capital account. अलग अलग करके बताना होगा. And that is why when we were discussing budget, it clearly said separate करके बताए ना कि देखो रेवेन्यू अकाउंट में रिसीट इतना होगा, रेवेन्यू अकाउंट में एक्सपेंडिचर इतना होगा. ठीक है? सिमिलरली कैपिटल अकाउंट में
रिसीट इतना होगा और कैपिटल अकाउंट में एक्सपेंडिचर. सो दे हैव सेपरेटेड इट एंड दैट इज व्हाट द मैंडेट इज. इट इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 112 दैट यू हैव टू क्लियरली सेपरेट इट. तो अगर रेवेन्यू अकाउंट में जो रिसीट रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब होता है, रेवेन्यू डेफिसिट मतलब डेफिसिट मतलब क्या, एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा होगा. सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब सिर्फ रेवेन्यू अकाउंट का एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू अकाउंट का रिसीट. तो रेवेन्यू अकाउंट में जो खर्चा हो रहा है, ठीक है, माइनस रेवेन्यू अकाउंट में जो पैसा आ रहा है, उसको कैलकुलेट करने को एक्चुअली हम लोग कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट. ठीक है, अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 39.4 लाख करोड़ है और रेवेन्यू रिसीट कितना 34.2 लाख करोड़. इट मींस एक्सपेंडिचर इज हाई, राइट? That is planned in the upcoming fiscal budget 2025-2026 budget estimate. So it means there will be a revenue deficit. तो revenue deficit को अलग से separately भी लिखा जाता है. तो अगर आप देखोगे तो revenue deficit is also improving. ये घट रहा 4% से आ गया है 1.5. बट सबसे इंपॉर्टेंट फिस्कल डेफिसिट होता है जो कि ओवरऑल देखता है बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू अकाउंट ऐड करके. ठीक है, लेकिन इसमें सेपरेटली रेवेन्यू डेफिसिट भी होता है. मींस बाय जस्ट टेकिंग इनटू अकाउंट द रेवेन्यू अकाउंट. So the gap between the expenditure and receipt in revenue account is also calculated. That's called as revenue deficit. एक और होता है primary deficit. ये बता देता हूँ. Primary deficit is actually nothing, but it is the difference between fiscal deficit and net interest payment. So primary deficit is nothing but fiscal deficit minus net interest payment of previous loans. यानी fiscal deficit जो भी हो, जो हमने डिस्कस किया, नेट इंटरेस्ट पेमेंट का मतलब हुआ कि जो पुराने लोन्स हैं, वी हैव टेकन अ लॉट ऑफ लोन्स एंड दैट इज व्हाट वी आर एक्चुअली गिविंग दैट बैक, है ना, इंटरेस्ट उसका दे रहे. तो ये जितना स्मॉल होगा दिस अमाउंट द बेटर इट इज, है ना. अगर हमने पुराने जो ओल्ड लोन्स हैं अगर उसका इंटरेस्ट पेमेंट बहुत कम है तो इतना अच्छा माना जाता है ना. जाहिर सी बात है कि पुराने लोन्स हमने चुका दिया है, बहुत कम इंटरेस्ट दे रहा हूँ. सो द स्मॉलर इट इज द बेटर इट इज. तो अगर ये जीरो होगा तो सबसे बेस्ट है, मतलब ये वाला हिस्सा, दिस पोर्शन इफ इट इज जीरो इट इज द बेस्ट. सो इट मींस बेस्ट केस है कि प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट. पर इतना होता नहीं है, तो जनरली कुछ ना कुछ तो होगा ही. इसका मतलब क्या है कि इन जनरल प्राइमरी डेफिसिट वुड बी लेस देन फिस्कल डेफिसिट, इसलिए कि दिस अमाउंट वुड नॉट बी जीरो इन दैट केस. ठीक है, बट आइडियली अगर प्राइमरी डेफिसिट फिस्कल डेफिसिट के बराबर है इट इज द गुड थिंग. अदरवाइज जनरली प्राइमरी डेफिसिट इज जनरली ऑन द लेसर साइड एज कंपेयर्ड टू फिस्कल डेफिसिट. ठीक है, अगर आप देखोगे तो प्राइमरी डेफिसिट 3 है ना. यहाँ पर टारगेट ये देखो, प्राइमरी डेफिसिट वाज 3% इन 2022-23 एंड इट इज नाउ 0.8% बजट एस्टिमेट. आइडियली होना कितना चाहिए, फिस्कल डेफिसिट के बराबर होना चाहिए. मतलब अगर प्राइमरी डेफिसिट 3 से इसके बराबर आ रहा है, नियर आ रहा है, तो इट इज वेरी गुड थिंग. इट मींस दैट वी आर स्पेंडिंग. तो इसका मतलब क्या होता है अगर प्राइमरी डेफिसिट एंड फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल, इट मींस दिस फिस्कल डेफिसिट, the gap between the expenditure and receipt is going for good purpose, actually for infrastructure and other projects. अगर इसी में सारा चला जा रहा है डेफिसिट, इसका मतलब है कि we are actually giving back only the old loans and we are not doing anything new. ठीक है, so that is what you should be knowing it. That is what तो primary deficit is fiscal deficit minus net interest payment of old loans. तो अगर आप सारा खर्चा पुराने लोन वापस करने में दे रहे हो, सारे डेफिसिट इसलिए हो रहा है कि पुराना खर्चा लोन वापस कर रहे हो, इसका मतलब आप नया कुछ नहीं बना रहे हो ना. आई हैव टोल्ड यू दैट फिस्कल डेफिसिट शुड बी 3% बिकॉज़ दिस हेल्प्स अस फाइनेंस द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और फाइनेंस इंडिया एज अ डेवलपिंग कंट्री. लेकिन अगर ये पूरा 3%, मान लिया 3% है और ये पूरा का पूरा 3% पुराने लोन्स देने में चला जा रहा है, तो इट इज नॉट अ वेरी गुड थिंग. वी आर स्पेंडिंग ऑल द एंटायर मनी by giving. तो उस हिसाब से प्राइमरी डेफिसिट जीरो हो जाएगा तो बहुत अच्छी तो चीज नहीं है. आइडियली ये जीरो होना चाहिए, मतलब होता नहीं, बट it should be as less as possible. So if this is zero, then primary deficit is equal to fiscal deficit, which is the best case. Okay, so we should try our best that the old loans we should be giving, we should have completed giving the old loans or the interest payment on the old loans. जितना कम से कम रहे उतना अच्छा है ना. और fiscal deficit should be used for actually financing the infrastructure projects, for financing important things. जैसे ऐसे समझ लो, मान लो कि आपने 100 रुपया कर्ज ले रहा हूँ आप हर महीने, every month you are taking loan 100 rupees, and this 100 rupees you are giving it
to someone else which you have taken. अगर आप 100 रुपया हर दिन खर्च दे रहे हो और वो 100 रुपया किसी और को दे रहे हो इसलिए कि आपने पुराना लोन लिया था, आपने अपनी हिसाब पे तो कुछ नहीं खर्च कर रहे हो ना. You are not spending on yourself for improvement, for your education or for like that. इसका मतलब है कि ओल्ड लोन चुकाने के लिए आप नया लोन ले रहे हो, है ना. So that is why primary deficit and fiscal deficit जो net interest payment है जितना less हो उतना अच्छा है. If it is very high, if it is then it is considered as bad that you are taking loans to again give back the loan, the old loans. So that's the idea of primary deficit. हाँ हाँ, इससे पता चलता है कि गवर्नमेंट हाउ वेल द गवर्नमेंट इज मैनेजिंग इट्स फाइनेंसेस. ठीक है, इससे यू विल गेट टू नो, है ना. दैट इज व्हाट. यस, द नेक्स्ट इज इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट. ये तो कॉन्सेप्ट रेवेन्यू डेफिसिट वी हैव डिस्कस्ड. व्हेन देयर इज अ गैप बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड रिसीट इन रेवेन्यू अकाउंट, दैट्स कॉल्ड एज इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट. इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब ये 2011-12 के बजट में लाया गया था कि इसमें क्या होता है कि रेवेन्यू डेफिसिट भी है बट ग्रांट इसमें से माइनस कर दें जो व्हाटएवर वी हैव एक्चुअली स्पेंट. ये छोड़ दो, ये आई डोंट थिंक यू विल बी आस्किंग इट, तो इसलिए आई एम नॉट गोइंग इन दैट डिटेल. बट दिस इज एक्चुअली द ग्रांट दैट इज गिवन टू द स्टेट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट. बट आई थिंक दिस विल नॉट बी इंपॉर्टेंट फॉर यू. तो आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ. जो जितना मैंने यहाँ डिस्कस किया, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट, दैट इज मोर देन इनफ. स्पेसिफिकली अगर दोनों में से कुछ नहीं समझ में आया तो ये याद रखिएगा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. ठीक है, there are highly likelihood that they can ask questions because उन लोगों ने लास्ट ईयर 2020 में क्वेश्चन पूछा था and they talked about long term repo operation, fiscal, forex reserve etc. इसलिए मैं बता रहा हूँ. Now bonds and debentures more or less same thing. This is actually a debt instrument used to raise loans. For example, मान लीजिए आप हो, this is you और ये कोई कंपनी है, मान लो कोई कंपनी, let's say I'm just giving example, मान लो टाटा कंपनी है and Tata company is giving a bond of, you bought a bond of let's say 1000 रुपये of Tata company. आपने 1000 रुपए का बॉन्ड खरीदा टाटा कंपनी का. I'm just giving example. और ये तो इसका प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो गया या फेस वैल्यू जो भी कह लो, और इसका इंटरेस्ट रेट है let's say 10% and the time period is let's say 1 year. I'm just giving example. ठीक है, तो अगर 1 साल का टाइम पीरियड तो आपको क्या हो गया, इसका मतलब है कि आपने 1000 रुपये लोन दिया. You have given 1000 rupee loan to Tata company. This is what bond means. ये डिबेंचर. अब क्या होगा, 10% इंटरेस्ट रेट है और 1 साल का है. मान लीजिए एकदम सिंपल इंटरेस्ट से और 1 साल का है. So I'm giving a simplest, very simple example. So if you have bought a loan of bought a bond of 1000 rupee of Tata company, it means you have given 1000 rupee loan to Tata for 1 year. ठीक है, तब 1 साल बाद क्या करोगे, after 1 year is complete, you will go to the Tata company and give back that bond. जो कागज होता है, there's a paper, bond paper आता है, तो आप उनको जमा करोगे and after 1 year they will give you back that 1000 rupee plus your interest, 10% interest, यानी 100 रुपये और. So after 1 year you will get 1100 rupees. So ये आपने बॉन्ड में इन्वेस्ट किया. So you invested in bond and after 1 year you got 100 rupee profit or benefit, whatever you can say. So this 100 rupees is nothing but interest you have got, है ना. So those who invest in bond, the return is interest. जो आप बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो आपको इंटरेस्ट मिलता है, because it is a debt instrument, कर्जा दे रहे हो लोन इंटरेस्ट रेट पर. That's how it works. और अगर गवर्नमेंट का बॉन्ड लोगे, खरीदोगे, so that's called as government security. It is nothing but a bond issued by the government. तो अगर आप गवर्नमेंट का बॉन्ड ले रहे हो, so if you are buying a government security, let's say of 1000 rupees, it means you are giving loan to government. ये मतलब हुआ ना, 1000 रुपये लोन आपने दिया. कौन से इंटरेस्ट रेट पे सब लिखा होता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऑफ दिस मच ईयर, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, whatever is the case, and what is the interest amount and all. ठीक है, so this is how the concept works. Now why I'm saying it, because open market operation में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का ट्रांजैक्शंस होता है between, so basically है ना, central bank buying and selling of securities in open market. For example, this is RBI. And RBI की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, that actually is supposed to regulate money supply in the economy. ठीक है, अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है, too much money supply is there. Because if there is too much money supply, it leads to demand pull inflation. I'm not going in inflation perspective, but
एक सिंपल आइडिया मैं दे रहा हूं, अगर मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा है, मनी सप्लाई, एंड द आरबीआई वांट्स टू टेक दैट, क्या करेगी आरबीआई? गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करेगी, सेल द गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू कॉमन पीपल, जनता को बेचेगी खूब, मान ली 100 रुपए गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और ऐसा 1000 फ्लोट करेगी। I'm just giving example. So 1000 people will buy government security, so it means the people will invest total 1 lakh rupee, है ना? 1000 लोग मिलके 1000 people will invest 100 rupees in government security. It means the RBI will get this 1 lakh rupee. So money supply यहाँ reduce हो गया जनता के पास, common public के पास. And reverse also happens if the RBI wants to, यहाँ पे government security sell कर रही है RBI, it is selling the government security to the common public. And if the RBI wants to increase the money supply in the economy, then what will happen? So RBI will buy the government security. So government security जब खरीदेगी तो RBI पैसा देगी. So our government security, if it will buy, then RBI will give it the back money, that money. ठीक है? So money supply in the economy है ना, central bank buys security, it injects money, and when central bank मतलब यहाँ पे RBI की बात हो रही है इंडिया केस में, sells security, it absorbs money from the system, and this is how actually the monetary policy works, or this is how the money supply in the economy is regulated. ठीक है? अब जैसे एक चीज होता है concept repo rate. What is this? These were asked in the exams. कोई बता सकता है what is repo rate? Anyone? Repo rate means it is the interest at which RBI lends money to the commercial bank when they need funds. Okay, तो और ये भी जो होता है, this is also done by exchange of government security. जैसे RBI है, अगर RBI लोन दे रही है, if it is giving loan to commercial bank, कोई भी commercial bank है उसको, so the interest rate at which it gives, जो भी मान ली 4% इंटरेस्ट है या 5%, इस इंटरेस्ट रेट को रेपो रेट कहते हैं. ठीक है? तो मान लीजिए, है ना, and this is how, और मैंने क्या बताया, जो ये RBI देती है लोन, it actually happens with the help of exchange of government securities. So RBI लोन कब देगी? So government security means वही bond, government bond, both are the same thing, है ना? So it means RBI is actually buying government security from, RBI buys government security from commercial bank. तो जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदेगी तो उसका मतलब उसको लोन देगी, है ना? I have told you just that bonds, if you are buying a bond of any company or a government bond, then you are giving loan to the commercial bank. ठीक है? So that is how it works. तो अगर RBI लोन दे रही है किसी भी कमर्शियल बैंक को, तो जिस इंटरेस्ट पे दे रही है, that's called as repo rate, and this is also called as repurchase operation. Repurchase operation. ठीक है? That is what you should know. और रिवर्स रेपो रेट में exactly opposite हो जाता है. So and this concept, इसको ना liquidity adjustment facility भी कहते हैं, है ना? When you say LAF, you should the thing that comes to your mind is RBI repo rate. ये सब टर्म्स पूछे जाते हैं एग्जाम में. You see the previous year question and you will realize. ठीक है? और I have already made a class on RBI. ठीक है? And just go YouTube पे search करो, you will get this video. You will get to know about monetary policy committee etc. and all. अच्छा, यहाँ पर तो आरबीआई के गवर्नर शक्ति कांता दास बने, बट हु इज द न्यू, ही वाज एक्चुअली द आरबीआई गवर्नर एट दैट टाइम, शक्ति कांता दास. हु इज द न्यू आरबीआई गवर्नर रिसेंटली मेड? उस वक्त जब वीडियो बना रहे थे, सो एट दैट टाइम मिस्टर शक्ति कांता दास वाज द आरबीआई गवर्नर. एंड हु इज द करंट आरबीआई गवर्नर? प्लीज टेल मी. द राइट आंसर इज मिस्टर संजय मल्होत्रा, 10 दिसंबर को बनाएंगे, है ना? is the new RBI governor. ठीक है? Now let me show you the question. देखो यहाँ पर question है, and this was asked in CLAT 2020. Can you please answer this? Anyone? That is why I'm saying that they are asking questions on economics terms and all.
So the right answer it was D. All of the above was the right answer. ठीक है, इसको पढ़िएगा. I'm not explaining it here because that's you'll have to give repo operations को पहले जाके पढ़िएगा, then you will understand why this answer is D. ठीक है. Now the next is एक जगह एग्जाम में आया था, let's let मैं PYQ देख रहा था कि CRR का फुल फॉर्म क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो. ठीक है. It is actually a tool by the RBI to control money supply in the economy. It is percentage of banks deposit that must keep it as a reserve. ठीक है, ये मैं बताता हूँ. Then there is statutory liquidity ratio. And a statutory liquidity ratio means it is a percentage of deposit that commercial bank in India must keep it in liquid assets. RBI uses this to ensure that banks have enough liquid. I'll explain both. ठीक है, तो liquid asset, तो मैं आपको बताता हूँ liquid asset क्या होता है. Then I will explain this. Liquid asset मतलब जो आसानी से spend किया जाता है. For example, the most liquid is cash. मैं एक्चुअली बता रहा हूँ, अगर आपके पास घर में कैश रखा है और गोल्ड रखा है, and if you want to go and buy something, which is easier, which will be more helpful, cash or gold? अगर आपको मान लीजिए 1000 का शर्ट खरीदना है, I'm just giving example. You want to buy a branded shirt of 1000 rupee, and you have 1000 rupee cash, and you have a gold of 20,000 rupee. So which is more easy for you to go and buy? कैश से आप जाकर खरीदोगे. गोल्ड में क्या, पहले आपको गोल्ड बेचना पड़ेगा, फिर जो 20,000 आएगा उसमें से 1000 खरीदोगे. It means cash is more liquid than gold. ये समझ में आया? This is the concept of liquidity. This is how it works. More liquid. ठीक है, अब हम बोलेंगे कैश, गोल्ड और लेट्स से और कुछ है, मान लो कि लेट्स से देयर इज सम फिक्स्ड डिपॉजिट. अगर हम इसमें बोले कि प्लीज सेट इन द ऑर्डर द लिक्विडिटी, सो लिक्विडिटी वुड बी कैश, then gold, and then fixed deposit. Why? Because cash आपके हाथ में, फौरन खर्च कर लोगे. गोल्ड को आपको बेचना पड़ेगा, you have to go and sell in the market. Fixed deposit you have to break because generally fixed deposit 5-10 years के लिए होता है. ठीक है, so liquidity का मतलब ये होता है. ठीक है, I hope you understand. Okay. Now you have to understand it's statutory liquidity ratio, cash reserve ratio क्या होता है, मैं बताता हूँ एकदम simple language में. देखो, currently the repo rate is 6.5%. Cash reserve ratio is 4% and statutory liquidity ratio is 18%. I have today taken it from RBI's website. अब देखो ये कॉन्सेप्ट क्या है, मैं सिंपल बताता हूँ. फॉर एग्जांपल, जैसे ये 4% है और ये 8%. जैसे कोई बैंक है, सो दैट बैंक एक्चुअली, बैंक वर्क कैसे करता है, डिपॉजिटर्स कम एंड डिपॉजिट द मनी. ठीक है, फिर बैंक जो है लोन देता है ना, गिव इट लोन्स. मतलब क्वेश्चन इज, जितना डिपॉजिटर पैसा जमा करते हैं सब लोन एक्सटेंड कर देता है? नो, है ना. जो फॉर एग्जांपल अगर एक दिन बैंक के पास मान लीजिए 100 करोड़ रुपए, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, दिस इज एक्चुअली टेक्निकली कॉल्ड एज NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी. इतना डिटेल नहीं जाना है, बट सिंपल लैंग्वेज है, समझो कि इन वन डे, लेट्स से इन अ डे द बैंक हैज 100 करोड़ अमाउंट. तो क्या 100 करोड़ अगर उसको डिपॉजिटर्स लाके जमा किए तो क्या सब लोन में एक्सटेंड कर देगा आरबीआई बैंक? नहीं. इसमें से 4% इट इज सपोज टू गिव इट ऑन दैट डे टू आरबीआई. 4 करोड़ जाके आरबीआई को जमा कर दिया उस दिन, एंड दिस इज कॉल्ड एज कैश रिजर्व रेशियो. ओके, एंड आरबीआई विल नॉट गिव एनी, ये है इसी बैंक का पैसा लेकिन आरबीआई को जमा करना है और आरबीआई विल नॉट गिव एनी इंटरेस्ट ऑन दैट. सो देयर इज जीरो इंटरेस्ट ऑन कैश रिजर्व रेशियो. बाकी बचा क्या, बाकी सब अमाउंट दे देगा? नहीं. सो बैंक इज सपोज टू गिव 18%, यानी 18% 100 करोड़ का कितना होगा, 18 करोड़ रुपीस इन लिक्विड एसेट which it cannot give as a loan. ये अपने पास रखेगा, ये बैंक आरबीआई को नहीं जमा करेगा, but ये 18 करोड़ which is called as statutory liquidity ratio. It has to keep the bank has to keep, every bank has to keep in liquid asset, liquid form में रखना है अपने पास. Liquid form मतलब इस फॉर्म में, गोल्ड, ट्रेजरी बिल, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, इस फॉर्म में या कैश के फॉर्म में रखना होता है. So that is called as SLR, and the rest amount it can give it as a loan and all. ठीक है, बाकी अमाउंट से दे सकता है. ठीक है, ये सब इसलिए CRR SLR ऐसे होते हैं, शॉक एब्जॉर्बर होता है कि मान लो बैंक ने लोन एक्सटेंड किया और वापस नहीं मिला और डिपॉजिटर्स आ गए और समथिंग लाइक दैट विल हैपन. ठीक है, सो दीस आर द थिंग्स यू शुड बी नोइंग अबाउट. ये सब बेसिक टर्म्स है, पूछे जाते हैं एग्जाम में, दैट इज व्हाई आई हैव डिस्कस्ड. देन देयर इज वन मोर थिंग which was asked in the ALET exam, the total value of all the final goods and services produced in a domestic territory is called as GDP. So domestic territory मतलब India, for example, if I am talking about India's GDP, so I'll be saying तो India का जो land है, then this is Lakshadweep and this is Andaman Nicobar. इसमें कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है,
and which is creating a monetary value and which is being sold in the market or is having some monetary value. Whether it is done by an Indian citizen or a non-citizen on this domestic guarantee, that will be added in GDP. But like a foreigner are, for example, a foreigner is coming to India and playing IPL. IPL एक सर्विस जनरेट हो रहा है ना, so तो उससे भी जो amount generate हुआ, that will also get contributed to GDP. So a foreigner is doing a service or a good producing a goods in the country, still that will be added in GDP. ठीक है, that is what you should be knowing about it. ठीक है, so yes आपको बताना चाहिए. अगर nominal terms में इंडिया की जो GDP है, that is actually 5th. जो लोग बोलते हैं कि इंडिया is the 5th largest economy, और रैंक 1 पे यूएस. ठीक है, एंड पीपीपी की टर्म्स में चाइना नंबर 1 पे, ये याद रखिएगा, प्लीज बी केयरफुल, एंड 3rd पर इंडिया है. So जब जनरली बाय डिफॉल्ट हम लोग कहते हैं, so we talk about this, कहते हैं कि इंडिया इज द 5th largest economy, so we talk about GDP nominal. ठीक है, अभी मैं आई एम नॉट डिस्कसिंग इन डिटेल पीपीपी एंड नॉमिनल, ठीक है, because otherwise the class will become very long, but you have to understand, ठीक है, and ये मैंने this will be discussing it in economic survey class. Tomorrow at 6 p.m. we'll be having an economic survey class. ठीक है, 6 p.m. पे, so we'll discuss in detail about these things. ठीक है, so do you have any question? अगर आपके पास कोई question you can ask. Otherwise tomorrow at 6 p.m. we will come up with economic survey class where we will be discussing about the state of Indian economy, about the world economy, etc., and different things. So if you have any question you can ask. I have tried my best to explain things in a very lucid way so that it would be helpful for you. So this is all about today's class. Thank you everyone. Thanks for watching. Please press the like button, share this video, and subscribe to the channel. Thanks for watching.